Assalamu alaikum. My name is Suga Fatma and the topic today I'm here to present is stool analysis. But before proceeding on to that, I'd like to discuss an ayat and a hadith. Ayat is ayat number 71 and 72 of Surah Kahf. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जुमा है, तो दोनों चल पड़े यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज़र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा, आपने इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गरक कर दें, ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे? इसकी तफसीर ये है कि then the two went forth until when they embarked on the boat, he made a hole in it. Whereupon Moses explained, have you made a hole in it so as to drown the people in the boat? You have certainly done an awful thing. And he replied, did I not tell you that you will not be able to patiently bear with me? Now moving on to hadith. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Imamata qala qala Rasulullah man ahabbu lillahi wa abghada lillahi wa a'za lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. इसका तर्जुमा ये है कि हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ही के लिए किसी से मोहब्बत की और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी की और अल्लाह ही के लिए दिया और उसी के वास्ते मना किया और ना दिया तो उसने अपने ईमान की तकमील कर ली। इसकी तशरीह, इसका तर्जुमा ये है कि जिस शख्स ने अपने हरकात व सकनात और अपने जज्बात को इसी तरह मर्ज़ी इलाही के ताबे कर दिया कि वो जिससे ताल्लुक़ जोड़ता है अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की रज़ा के लिए जोड़ता है और जिससे तोड़ता है अल्लाह ही के लिए तोड़ता है, जिसको देता है अल्लाह ही के लिए देता है और जिसके देने से हाथ रोकता है सिर्फ़ अल्लाह ही की खुशनुदी के लिए रोकता है। गर्ज जिसके इजाबी और सल्बी, कल्बी और रजनात और जज्बात मसलन मोहब्बत और अदावत और इसी तरह मस्बत व मनफी और ज़ाहिरी अफ़ाल व हरकात मसलन किसी को कुछ देना या ना देना, ये सब अल्लाह ही के वास्ते होने लगे और बजे सज़ाए इलाही कोई और महरिक और दाया उसके अमाल व अफ़ाल के लिए ना रहें। अलगर्ज़ ताल्लुक़ बिल्लाह और कामिल अब्दियत का ये मुकाम जिसको हासिल हो जाए उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। Now moving on to our presentation, I'm going to discuss the tests that are performed for stool analysis. First, we are going to discuss the microscopic examination. In this, the first step is to collect a fresh stool sample in a clean, dry container. It's important to avoid it from any urine or water contamination. Then a small portion of that stool sample is placed on a glass slide, and to improve its visibility and facilitate examination, a drop of a staining solution is placed on it like iodine or saline, and then the prepared slide is examined under the microscope by a trained laboratory technician or pathologist, and the technician looks for specific structures or substances in the stool samples such as parasites. In our stool sample, we can find parasites like helminthes, example roundworms or tapeworms. Bacteria like salmonella or campylobacter may be observed. Fungi like candida can be identified. Next, we are going to discuss culture test. The culture test is used to identify the presence of a specific bacteria or viruses that may be causing an infection. In this, simply a fresh stool sample is collected in a sterile container. It's essential to collect that sample before starting any antibiotic treatment because it is possible that antibiotic can interfere with the growth of bacteria in the culture. The next step is sample processing. You take a small portion of a stool and transfer it into a culture medium. Culture medium provides the necessary nutrients for bacterial growth. Different culture media may be used depending on the suspected pathogens. Then the culture medium containing that stool sample is placed in a warm incubator that provides optimal condition for the growth of bacteria. The incubation temperature may vary depending on the types of bacteria being targeted. Typically, the cultures are incubated at around 37 degrees centigrade for 24 to 48 hours. And then after the incubation period, the culture plates are examined for the presence of bacterial growth. We look for specific colonies or patterns that may indicate the presence of pathogenic bacteria. Various tests such as gram staining or biochemical tests may be performed to further identify and characterize the bacteria. So in simple words, the culture test is used to detect the bacterial colonies. Now moving on to sensitivity test.
once the stool culture has been incubated, then bacterial growth is observed, and then we prepare inoculum of it. After that, we then use a sterile swab and loop to streak the bacterial suspension onto the surface of special agar plates. These plates contain various antibiotic discs that releases specific concentrations of antibiotics. The sensitivity test platings are then placed in an incubator for 16 to 24 hours for the so that they can grow. This allows the bacteria to grow on the agar surface. After the incubation period, the technician examines the plates to observe the zone of inhibition. Zone of inhibition is the area where bacteria doesn't show its growth. Then we compare its value with the CLSI, and then we make a report summarizing the sensitivity test result. Prepared includes a list of antibiotic tests that indicates which antibiotics were effective and ineffective against the isolated bacteria. Next, we are going to discuss about chemical analysis. Chemical analysis is performed to test for the presence of blood, mucus, or any other abnormal substance in the stool. In this, simply a fresh stool sample is collected from the patient using a clean dry container, and then stool sample is prepared for analysis. Chemical analysis like pH measurement. In this, the pH level of a stool is measured using a pH meter. The pH measurement provides information for the acidity or alkalinity of the stool, which can be influenced by various factors such as diet, medications, or GIT conditions. Occult blood test. Occult blood test is used to detect the presence of hidden blood in the stool that may not be visible to the naked eye. इस टेस्ट से हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें कोई कोलोन कैंसर या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज तो नहीं है. Ova and parasite exam. This test is used to identify the presence of parasitic infections that can cause digestive systems. वो parasites से पता चलते हैं जो कि infection cause कर रहे हैं, like diarrhea, cramping and nausea. Fecal fat test is used to determine whether the body is properly digesting and absorbing fat from the diet we are intaking. Elastase test. Elastase is basically an enzyme produced by pancreas, and by measuring the amount of elastase, we evaluate pancreatic function in the stool. Lastly, I am going to discuss the importance of stool analysis. अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. हम इससे पता कर सकते हैं कि हमें जल्दी पता कर सकते हैं कि कौन से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और फिर ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से जल्दी शुरू कर सकते हैं, और फिर ताकि हेल्थ कंडीशन ज़्यादा सीरियस ना हो. डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस. हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें कौन सी इन्फेक्शन है, वो कौन से पैरासाइट्स, फंजाई, बैक्टीरिया या वायरसेस हैं जो कि वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं. उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं. एवेलुएशन और डाइजेस्टिव फंक्शन. हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो हम डाइट इनटेक कर रहे हैं सही से डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही. एंड लास्टली, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट प्रोग्रेस. हम इससे पता कर सकते हैं कि जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है. फिर उसी हिसाब से अगर इफ़ेक्टिव नहीं होगी तो हम अपनी ट्रीटमेंट चेंज भी कर सकते हैं. एंड थैंक यू. माय प्रेजेंटेशन ends over here.